अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्लास की फ़िज़िक्स की बुक उसका टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसकी डेफिनेशन आगे उन्होंने बताई है, द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसने एक और डेफिनेशन इसकी बताई हुई है, वर्किंग डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आगे उसने फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू विच इज़ अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड between two oppositely charged parallel plates. The positive charge will move freely from B to A, the gain kinetic energy. But when the positive charge is allowed to move from A to B, an external force must be applied on the charge against the electric field and its gain potential energy. When the charge moves from A to B, it will move with the uniformly velocity, keeping electrostatic equilibrium. Suppose E is the electric intensity between the plates, then the equilibrium may be achieved by applying a force QE in a positive direction at every point along its path. Work is done on the charge and it's stored as a potential energy of the charge. This work is independent of a path but dependent upon the initial and the final position. फर्दर इसको उन्होंने फार्मूले से हमें एक्सप्लेन किया, लेट WAB be the work done by a force is carrying the positive charge Q from A to B, keeping the charge in equilibrium. This work done on the charge Q naught is equal to the charge in a potential energy. So delta U is equal to WAB, UB minus UA is equal to WAB. इस फार्मूले को उसने आगे आपको डिफाइन करके बताया, where UA and UB are the potential energies at point A and B respectively, but the potential difference between the points is an electric field is the work done on a unit positive charge keeping the charge in equilibrium. WAB is equal to Q naught is equal to delta U over Q naught. UB is over Q minus UA over Q is equal to VB minus VA is equal to delta B. Then the formula is delta V is equal to VB minus VA is equal to WAB over Q naught is equal to delta U over Q naught, where VA and VB are the electric potential of point A and B respectively. The electric potential energy and electric potential difference between the point AB are related as delta U is equal to Q naught delta V is equal to WAB. Unit. The unit of potential energy is joule and that charge is coulomb. Thus, unit of a potential difference is joule per coulomb, which is equal to 1 volt. 1 volt is equal to 1 joule over 1 coulomb. The potential difference between 2 points will be 1 volt if 1 joule of work is done to move a positive charge of 1 coulomb from one point to the other point. Keep the charging is equilibrium. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।